In this chapter, the first we will understand what do you mean by fluid. Then we will see the property of fluid. Okay. And then we will see the mechanical property of this fluid. The fluid is anything, any substance that can flow. So scientists say more example, liquid is flow, having flowing property. And same as it is, gas is also having flowing property. For example, dry gas. मूवी में कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई बहुत यूज होता है, देखो ना ऐसा फॉग दिखाने के लिए. So this carbon dioxide gas is show the property of flow. Okay. Now we will see the next part, their property. So the scientist says that the fluid is incompressible. We already know about if you push any liquid. Can you push any liquid? We know that you cannot apply any pressure to any liquid. If you are applying pressure, their size is changed? No. There is no change their size and shape. Okay. Because already जो liquid के particle है वो already bonding में near रहते हैं. You already know about in chemistry, correct? If they are incompressible, that means their mass is fixed. If their mass is fixed, that means their density is also fixed. Okay. The liquid mass and density is always. Second property says they are non-viscous. What do you mean by they are non-viscous? So first, viscous means thickness, liquid thickness. How much any liquid is thick. Okay. Non-thickness means this type of fluid does not show this type of property. For example, if any fluid is flow, for example, if honey is flow, the friction is other. Because of friction, their flow is stopped. We already know about the friction property. What is friction? तो for example, अगर हमें कोई बुक को पुश करना है एक टेबल से, तो हमें एक साउंड सुनाई देगा. What you heard? Sound. Yes, students. What happened? So this sound represent the friction. Now we already know about friction. एक जो रगड़ होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है. बोलते हैं जो फ्लूइड है ना, इसमें इस तरह का जो फ्रिक्शन है वो अकर नहीं होता. ठीक है. इसमें जितनी भी लेयर होती है लिक्विड की वो इक्वली फ्लो करती है. That is why we are calling non-viscous. Okay. Viscous में होती है property. Non-viscous में this property is not there. I hope you understand fluid and their property. Now we will see the second term, that is pressure. Now pressure is represented by capital P symbol, and the pressure definition, this formula is pressure definition. What pressure say? The perpendicular force per unit area. For example, कोई wall में अगर कील को हमें put करना है, so what we are doing with the help of hammer, what we use. Now this nail is perpendicular to the wall. So can we say that कि प्रेशर कब अप्लाई होता है? जब किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं और वो जो चीज है वो परपेंडिकुलर होती है उस एरिया के, तो क्या अप्लाई होता है? प्रेशर. ओके. और वो चीज अंदर जाती है. अंडरस्टूड. तो एरिया भी मैटर करता है. इफ दिस इंक्रीज एंड दिस डिक्रीज, हमें पता है जो रेशियो होते हैं दिस आर डूइंग द अपोजिट वर्क. इफ फोर्स इंक्रीज, एरिया डिक्रीज. आई होप यू नो अबाउट दिस पार्ट. Divide wala part always doing opposite. Now one more definition is there for pressure, thrust upon area. Now thrust is also represent the same thing, perpendicular force. Okay. So confuse nahi hona. Force and thrust ka meaning is same. Now perpendicular force, what do you mean by perpendicular? So suppose this is my surface, horizontal surface. Okay. And I am applying a force from this side. So understood this here. In each place, I am applying the force which is perpendicular to this horizontal surface. If this surface, the force is perpendicular, so we can say that this is perpendicular force. Or most of the time, we are applying perpendicular force. We will see the example of this. Now, pressure is a scalar quantity. It is depend upon the magnitude, but does not depend upon the direction. There is no direction for pressure. Now pressure is isotropic property. What do you mean by isotropic? I hope you heard this word in chemistry. Student, can you tell me about isotropic? Iso means same. Iso, very good. Iso means same, and tropic means sport wala trophy. Huh? Tropic means, what do you mean by tropic? Now we will see the example here. A container, this container contains liquid. Now we know that each liquid, suppose I'm taking this liquid. Now this liquid
परफॉर्म इक्वल प्रेशर इन बोथ साइड, बिकॉज उसके ऊपर भी लिक्विड होंगे, उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, इन डाउनवर्ड साइड also liquid is present. So this liquid also apply pressure to center of the liquid, and this center liquid is also apply pressure equally in all four the directions. तो लिक्विड में हर एक लिक्विड का जो प्रेशर या फोर्स होता है वो ईच डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, the pressure of the liquid is same in all directions, that is called isotropic property. I hope you understand. Now we are study about pressure, so the unit is same, Newton per meter square, or we also represent this unit by pascal, or sometimes we also use the atmospheric pressure. Okay, CGS unit is the opposite of Newton per meter, dial per centimeter square. Now we will see the expression for pressure exerted by liquid column. So the expression what we are studying in this expression, how pressure applied by a liquid column. कोई liquid column में pressure कैसे apply होता है. For example, this is my container. Suppose ये एक beaker है या container है, okay, and मैंने इसमें क्या किया है, liquid fill कर दिया. Liquid में suppose we are taking water, okay. So what happens when we are putting water? Common sense है, वो liquid बाहर तो आएगा नहीं. They are in inside. Why this liquid is inside? Because of gravitational force. Gravitational force always act this liquid on downward direction. Correct now? So one force which is pull this liquid downward. So we name this downward force point as A. And one more force that is called normal force. We know that the normal force is also pull this liquid downward. That is why we will see कभी भी किसी चीज में लिक्विड होता है तो कुछ इस तरह से होता है. ये कैपिलरी में इस तरह का तुम्हें जो शेप है वो दिखाई देगा, और ब्यूरेट में भी दिखाई दिया होगा जब तुम लोग ने इन केमिस्ट्री यू आर डन एक्सपेरिमेंट. रिमेंबर दिस shape represent there are some force which is applied in upward direction, and that force is called normal force, and this normal force is, चलो we will see this. Now यहाँ पर हमें दिख रहा है दो फोर्स है, and both force are doing the same thing. The first force is also downward and the lower bottom force is also downward. So can we say that the total normal force applied at point some point is equal to the weight of the liquid column, because both force doing the same thing na. So can we say that the normal force and the gravitational force both are same? So in this concept the normal force is represented by F and the gravitational force is represented by mg. Why we are represented by m and g? Because mass is also depend upon gravity. If your mass increase, so gravity pull downward is also increased, right? Now we know that liquid having density. So what is the formula of density? Density is nothing but mass upon volume. So take this volume left hand side, what we are getting, mass is equal to density into volume. So you can see here mass is there. So replace this mass by density into volume. So what do you get? Force is equal to volume into density into gravity. Second, we know the formula of volume. In this case, the liquid occupy area. So can we say that this is the area? Liquid occupy area, and from this point so to the bottom point represent the height of the liquid. Clear? So can we say that what is the volume of the liquid? The occupy area into height is called volume. Correct? और simple word में क्या बोलेंगे? The internal part where the liquid is there, that is called their volume part. Okay. So it is nothing but area into height. So we are replacing this volume by area into height. So what we are getting a formula? The total normal force, that means the total force which is applied on this liquid or pressure is applied on this liquid is AH rho g. So this is force. So we have to convert this force by pressure, because हम लोगों को क्या find out करना था, तो heading में लिखा है pressure applied by liquid column. कितना pressure apply हो रहा है? So pressure formula is force upon area. We already know about this formula. Now just मैंने calculate किया what is force AH rho g upon A. Now this A and this A is cancelled. What you are getting? H rho g. So with the help of this formula, you can easily calculate how to find the pressure which is applied on the liquid. Understood this formula?
This equation represent the pressure at any point which is applied on the liquid. कोई भी point का apply, जैसे for example I said बताओ this point में कितना pressure लग रहा है, तो with the help of this formula you can calculate. How you calculate? You know about height, density and g. और क्या फैक्टर है जो किसी लिक्विड के प्रेशर पे डिपेंड होते हैं? तो देयर आर थ्री फैक्टर विच आर डिपेंड अपन. फर्स्ट इज हाइट. इफ द हाइट इज लेस, so the pressure exerted by liquid column might be higher or lesser. Second is density. If the liquid density is very hard, so the gravity pull is low. If the density is very low, that means that thickness is low, so the gravity is high. Understood? Second is acceleration due to gravity. How much gravity is pull this liquid downward direction. I hope you understand. Now there are some word came here. Gauge pressure. What is gauge pressure? So if suppose in this case there is also one more force is applied on the liquid. Suppose that force is atmospheric pressure. ये भी क्या कर रही है? लिक्विड पे फोर्स लगा रही है. तो एट दैट टाइम मैं इसी फॉर्मूला में एक और चीज ऐड करूंगा, एंड दैट पार्ट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. व्हाई एम आई एडिंग दिस? आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कि दिस लिक्विड इज आल्सो हैविंग वन मोर प्रेशर व्हिच इज applied on that liquid, which is nothing but atmospheric pressure. So same formula रहेगा, only what we are adding P naught. I hope you understand. Now take this P naught left hand side. So what we are getting? P up minus P naught. So right side में क्या है? We are represent this H rho G by gauge pressure. तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बना. The difference in pressure is called gauge pressure. So the difference means this pressure is represent the total or absolute pressure, and P naught represent the atmospheric pressure. Minus को हम लोग English में we are represent by difference word. So difference between two pressure is called gauge pressure. These are the device in which we are measuring the pressure. Okay, we have lots of device. We will see one by one each device. Okay, students. I hope you understand this part, students. Anyone having any Yes. doubt? Shall No. we further? Okay. Now second word, I'm going थोड़ा आगे पीछे जा रहा हूँ मैं. Okay, but we are covering all part in textbook part. Hydrostatic paradox. What is hydrostatic paradox? So hydrostatic paradox says the any liquid container perform equal pressure in both sides, and the force is also equal in all sides. What is the definition? The statement is represented here. The shape of the vessel containing liquid doesn't affect the pressure. This is true. किसी लिक्विड किसी कंटेनर में प्रेजेंट. अब मान लो मेरे पास तीन टाइप के कंटेनर है. एक कंटेनर सिंपल है, वन कंटेनर इज जस्ट लाइक अ ग्लास, एंड सेकेंड कंटेनर इज अप इंक्लाइन शेप. तो इस शेप से इसके अंदर जो प्रेशर है उस पर असर नहीं पड़ेगा. पर हाँ चलो ये तो अंडरस्टैंड हो गया, पर हमें ये भी तो स्टडी करना. चलो प्रेशर का तो असर नहीं पड़ेगा, पर डायरेक्शन ऑफ प्रेशर कहाँ रहेगा वो कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ प्रेशर वी आर फाइंड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फोर्स. एंड व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? Actually normal force represent the direction of the liquid. Actually liquid का direction कैसा है? Container base पर. So here container is very straight. According to straight, suppose I am taking this point is my normal force. If the container straight, so common sense that their the liquid direction is also horizontal direction. In this place the direction is horizontal. So this container shows what is the direction of liquid. अगर लिक्विड के नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन स्ट्रेट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रेशर है वो ओके मीडियम लग रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है. कैन वी से दैट बहुत कम या मीडियम है? तो इन ए में जो प्रेशर है वो कैसा है? मीडियम है. ऑल डायरेक्शन में प्रेशर इज देयर, नो डाउट, बट द प्रेशर इज मीडियम. ओके. इन सेकेंड केस देयर आर सम इंक्लाइन लाइन इज देयर, है ना. थोड़ा सा ये बैंड है outside. At that place we are representing this. This is my normal force. In this case I am taking this is my x-axis and this is y-axis. अब बैंड है तो कॉमन सेंस है, ये जो रिजल्टेंट लाइन निकल रहा है ना बिटवीन y और x-axis, this is my normal force. Because of bending the normal force is acted little bit upward direction. If they are bended little bit upward direction तो कॉमन सेंस है जो प्रेशर है वो और लो हो जाएगा बेस्ड ऑन मास इन दिस ग्रेविटी. करेक्ट ना? बिकॉज ये ज्यादातर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है लिक्विड को. तो यहाँ पर भी वेट के बेस पर प्रेशर इज देयर इन ऑल डायरेक्शन सेम, बट द शेप ऑफ द कंटेनर चेंज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स. Force is there but less force is there. So can we say that
the pressure in here is little bit less than other container. So shape matter करता है कि pressure ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा. Next case, now shape is very different. Now based on this, I'm first taking x-axis, second I'm making y-axis, and this between these two lines I'm making one more axis. This is nothing but normal force, right? Now here normal force is acted downward. In this case, can I say that the mass into gravity pressure is greater than mass into gravity? Because here pressure is acted downward direction. Now downward direction pressure is also called thrust. We know about this new word thrust. Okay, force acted downward हो रहा है. I hope you understand three diagram. And this three diagram is explained by Pascal. It's also called Pascal law. He done demonstration, and what he found, a different container having the same pressure, but based on the shape of the container, their pressure is different. Understood? But one more word is remember, pressure does not change. Okay, students. Each liquid particle having pressure is always same. Understand this part? Anyone having any doubt? No, sir. Okay, so we will go further. Pascal law of fluid pressure. What is Pascal says? The Pascal says the pressure applied to any part of the enclosed fluid. Enclosed means suppose a container, we take one container and this container is closed in all sides. If they are closed in all sides, we can say that enclosed, correct, fluid. At rest, at rest is transmitted. What is transmitted? The fluid is transmitted. The fluid is any example, water. Is undiminished. Undiminished means not ending, जो खत्म नहीं होता. Understood? Unfinished, not finished. To every portion of the liquid and the wall of the container. तो इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं. Simple word में क्या बोल रहा है Pascal? The pressure of the liquid is same in all directions. The Pascal also says the liquid follows the isotropic property. But here isotropic property को हम लोग थोड़ा big level पे explain कर रहे हैं. So we will see here example. Suppose we have one container. Now each container having open place. ठीक है? This open place I'm name it A. This open place I'm name it B, and this open place I'm name it C, and this is the open place where I'm name it D. Now each having the area is same. So can we say that this area is same? This area, if all areas same, can we represent by A, or A1, A2, A3? Now if the area is same, तो जाहिर बात है इसमें से लिक्विड भी इक्वल एरिया में निकलेगा, इक्वल क्वांटिटी में. नाउ सपोज मैंने इसमें फ्लूइड भरा, फुल फ्लूइड भरा हुआ, तो हियर यहाँ से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लगेगा. इधर से डाउनवर्ड फोर्स इस लेफ्ट साइड से लग रहा है. In this place, the downward from left side, and this place, downward place, the force is upward direction. If I'm calculating each direction, how to calculate? What we have to calculate here? So pressure in each direction is equal. What we are understanding this part. A common sense है, liquid में आप कोई भी part को अगर आप सारे part को एक साथ open कर दे तो मान लो ये null है. If you open all parts together, we know that in each part the liquid flow is safe. Correct? If you have any doubt, we will see one more example. This is normal pipe, curve pipe. Now if I fill the liquid inside this pipe and I'm opening both sides together, so we know that so in both sides the liquid flow is simultaneously, correct, in same time. जितना यहाँ से liquid निकलेगा उतना ही liquid यहाँ से भी निकलेगा. Understood? This is called Pascal law. We see one more example for better understanding. First, we see the equation. P1 is nothing but F1A. We know the formula of pressure, force upon area. So can we say that P1 is nothing F1 upon A, P2 is F2 upon A2, and P3 is nothing F3 upon A3, and P4 is nothing but F4 upon A4. All are equal. We see one more example. Suppose I have football. Now this football does not contain air. So we are going for putting the air. When we are putting the air in this football, तो ऐसा कभी होता है कि एक साइड हवा ज्यादा भरती है, दूसरा साइड फुटबॉल में हवा भरता ही नहीं है? ऐसा देखा है किसने स्टूडेंट?
No, sir. तो आपके पास बलून है, बलून में अभी हवा नहीं भरा. If you are blow this balloon, the air going inside, they are filled equally in all direction of this balloon. So air is going equally in all direction. This example says that the Pascal is correct. The air or a liquid, we know that a fluid is nothing but air or liquid, sorry, gas or liquid. So gas is filled in all direction equal time. Similarly, the pressure is applied in each area in equal time. This is phase Pascal. I have to understand now. Pascal law says the pressure is same in all direction. Okay, students. Anyone having any doubt? Pascal law. No, sir. Clear है ना? Pascal is very simple concept. इसमें टफ नहीं है. नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये चैप्टर. एक्चुअली ये जो चैप्टर आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, दिस चैप्टर इज देयर इन क्लास 11 and now this chapter come to the class 12 when the portion is changed. The next concept is mercury barometer. This mercury barometer is a device in which we are measuring the atmospheric pressure with the help of this mercury barometer. The name itself says this liquid is nothing but mercury. Now this is ये जो उल्टा ट्यूब दिख रहा है, this is nothing but your capillary tube. You can say that it's capillary. When you put this capillary inside this container, so this container liquid is going inside this capillary. Now see the height. Here the height is very less, and the capillary के अंदर वो तो upward तक जा रहा है और एक लिमिट के बाद वो stop हो गया. So from this to this place is represent the height of the liquid container. Now common sense है, यहाँ पे थोड़ा वेपर भी निकलेगा मर्क्यूरी का. So this vapor is represented by vapor pressure of the liquid. Understood? Now vapor pressure of the liquid, we know that the vapor pressure or is very negligible. अगर लिक्विड से मैं प्रेशर की बात करूं तो किसका प्रेशर ज्यादा होता है? एयर का प्रेशर ज्यादा होता है या लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है? कॉमन सेंस है, लिक्विड हैविंग लार्ज प्रेशर. अंडरस्टूड? So if the air pressure or vapor pressure power is very low, so we can represent this pressure by 0. 0 represent their pressure is very, very negligible. Okay. Now second, the liquid pressure. Now we know that the atmospheric pressure is applied downward direction. Okay, students. Now name it. This point is my B point and this point is my C point. This B and C point is between the liquid point. ये liquid के अंदर वाले point है. So common sense है. Pressure at point B and pressure at point B is also same. Because both are liquid inside liquid pressure ना. तो जितना प्रेशर इधर रहेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी रहेगा. नाउ देखते क्या क्या केस देखे. हम लोग को देखना ये प्रूव कैसे हुआ. P is equal to HROG आया है. So first we know that PA is nothing but 0. I know about this PA is nothing but the pressure. I'm name it this point. This name is vapor pressure of the liquid. We know that the vapor pressure of the liquid is very negligible. So we are represented by PA. Now we take one more point, outside point. We take this point is as a point. We A रहने दो. Now we know that the atmospheric pressure और ये जो surface of liquid के ये near वाला जो liquid का pressure है, both are same. Okay. So can we say that PC is nothing but the atmospheric pressure? ठीक है. Outside liquid कितना band होगा या कितना horizontal रहेगा, it fully depend upon the atmospheric pressure. This part is clear, students. So can we say that PC is equal to PV? वो तो अभी अभी मैंने explain किया, because both part is inside the liquid column. And second thing, now PC is equal to atmospheric pressure. If PC and PV is same, so can we say that PC and PC is also equal to atmospheric pressure? So in atmospheric pressure, we are represented by symbol P0. I hope this part is clear. Now we have formula. Yes. What is the formula? P is equal to P0 plus HROG. We have this formula. We know how we are calculating this formula. Anna, students. Now here PC, PB, this part. Okay, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ. PB is equal to, मैं इसको ले लेता हूँ PA. So PB is equal to P is equal to HROG. Understood? Now अपने पास हमें पता है जो atmospheric pressure है, यहाँ हम लोग atmospheric pressure नहीं, we are taking mercury vapor pressure. Mercury vapor pressure कितना है? 0 है. If I'm taking this part 0. And second thing, PD is nothing but the atmospheric pressure. That means P0. So I'm replacing this part by P0. And PA part by 0, and this part is as it is.
So what we are getting the formula of atmospheric pressure. This is nothing but H rho G. Understood how we are getting this formula? सर ये नहीं समझा फॉर्मूला. Which part? First step is clear, students. PA is equal to Yes 0. sir. Okay. Sir Second last step is part this फॉर्मूला. step is clear. Second last step. PB is equal to No PA sir. plus H rho यही G. बात. अच्छा यहाँ पर मैंने P नॉट क्यों हटाया? Because we have to calculate the atmospheric pressure. That is I am removal and I am writing here PA because हम लोग को ये mercury vapor pressure देखना है. Understood? कैपलरी के अंदर जो मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर है ना, आई एम रिप्लेसिंग हियर PA एंड दिस PB रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट प्रेशर. अब ये डिवाइस किसके लिए यूज होता है? इन दिस डिवाइस वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So that is why I am taking here PB और we already know PB is equal to atmospheric pressure. Remember मैंने क्या बोला था? PC और PB बराबर है, बट PC के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैंने क्या किया? PB की जगह पर आई एम रिप्लेसिंग P नॉट बिकॉज P नॉट एटमॉस्फेयर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो PA है वो मर्क्यूरी के वेपर प्रेशर है, जो क्या है मेरे को वैल्यू PA इज इक्वल टू 0. तो आई एम पुटिंग हियर 0. अगर ये पार्ट पूरा चला गया तो क्या बचा? H rho G बचेगा ना. तो इस फॉर्मूले के जरिए वी कैन इजीली कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अंडरस्टूड स्टूडेंट? Yes sir. आई होप यू क्लियर दिस पार्ट, है ना? क्लियर है ना? वी सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल. फर्स्ट इट इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट का देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. ये जो पर्सन है वो देखो पुश कर रहा है, ये एक पिस्टन लगा हुआ है. तुमने देखा होगा जो गैरेज होता है ना, उस गैरेज में आप लोगों ने इस तरह का डिवाइस देखा होगा. ये डिवाइस के जरिए आप लोग इजिली कितनी भी हैवी मास की कार को पुल कर सकते हैं. So how they are work? So they are work in the principle of Pascal. So one area is very small, so we name the area. This area I'm saying A1, which is very small. Pipe यहाँ पे small है, and this area is I'm represented by A2. This area is big. So can we say that area 2 is greater than area 1? I have this part is clear. Okay. Second thing. Yes. दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट बिकॉज यहाँ पर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा. वी ऑलरेडी नो अबाउट जितना प्रेशर यहाँ से पर्सन डालेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी जाएगा, क्योंकि पास्कल ही बोलता है द प्रेशर इज इनसाइड एनी ट्यूब और एनी टाइप ऑफ कंटेनर इज ऑलवेज सेम. सिर्फ डिफरेंस क्या आता है? मास इनटू ग्रेविटी का और शेप के बेस पे बदलाव आता है, बट प्रेशर डज नॉट चेंज वट एवर शेप इज देयर. So can we say that P1 is equal to P2? P1 is this side pressure and P2 is large area size pressure. Now we know the formula of pressure. Pressure is nothing but force upon area. So can we apply this formula here? P1 is nothing but force. अच्छा P1 के बेस पे तो ये हो जाएगा. So what is the formula of force? Force का formula क्या हो जाएगा? We take area left side, so it becomes pressure into area. So force is nothing but pressure into area. ये थोड़ा सा आगे आ गया. Pressure into area. So with the help, अगर ये फॉर्मूला इसके बेस पे बन रहा है तो कैन आई से दैट फोर्स F1 is also equal to force F2. If their pressure is same, so force upon area is also same. Correct ना? Understood this part? अब इस बेस पे ये फॉर्मूला लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ना. तो प्रेशर इंटू एरिया P1 A1 इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया P2 A2. सेकंड क्या देखने वाले? अगर एरिया A2 बिगर है तो उसका जो फोर्स होगा वो भी ज्यादा होगा, और जो एरिया कम है तो उसका अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो उसका फोर्स भी तो कम रहेगा, बिकॉज फोर्स एंड एरिया बहुत आप देखो साथ में इक्वली पार्ट में दिखेगा. अंडरस्टूड? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. यही है पास कर लो. क्लियर? Yes sir. तो हम लोग एक ही चीज को घुमा घुमा के वही चीज को अंडरस्टैंड कर रहे थे. मेरे को किसी ने स्टार बनाया है. यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक. हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज कहाँ पे होता है? जो ट्रेन या जो बड़े ट्रक होते हैं उनमें जो ब्रेक सिस्टम वी आर यूजिंग दैट इज आल्सो नथिंग बट हाइड्रोलिक ब्रेक. सेकेंड है हाइड्रोलिक प्रेशर. तो क्रॉलर देखा होगा तुम लोग ने, दैट क्रॉलर में जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी बिग बिग ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड क्रॉलर. देखो नीचे डायग्राम मैंने बनाया. ये क्रॉलर भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है. अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो तो दिस एरिया इज बिग and this area is small. So again I'm taking the same thing. I'm representing the same symbol here. This is my A1, this is my A2.
The A2 का area is big, A1 area is small. The same. We know that pressure is same in both sides. तो देखो same derivation बनेगा जो already हम लोग ने ऊपर बनाया था. A2 is greater than A1, P1 is equal to P2 and F2 is greater than F1. क्लियर? तो यहाँ से फोर्स बहुत ज्यादा आएगा और वो फोर्स यहाँ पे कम हो जाएगा. अंडरस्टूड? I hope understand this all application and how to derive Yes. this application. वो जो मैंने वर्ड लिखे हैं मैथ वही वर्ड आपको डिराइव करना है इस कॉन्सेप्ट को. The second we see effect of gravity on fluid pressure. So we are coming to अब मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा. We have very less time. So what we do, the remaining part we will see later, है ना? देखो 3 मिनट ही है और वो जो कॉन्सेप्ट डेरिवेशन थोड़ा सा वीक है. ओके स्टूडेंट, पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ वरना मैं ये भूल गया तो प्रॉब्लम होगा. कोई गया तो नहीं है ना? बिकॉज इफ यू आर राइट नाउ यू आर absent तो तुम लोग का absent लग जाएगा. Very Shifa is not there. Most of the girls is not there here. अब अभी भी कंफ्यूज है क्या? Take attendance first. 3 to 3. Okay. So student, today is date 3 na? 3, 8, 20 and day is Monday. Subject is physics. Okay. And in here Bhanukar. So this is physics. Date is 3, 8, 20. ओके जो रिमेनिंग पार्ट में किसी को कोई डाउट आया है क्या? जो स्टार्टिंग पार्ट किया कोई भी पार्ट में. ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिंपल है पर थोड़ा सा ये बड़ा है. अगर रोटेशन से कंपेयर करेंगे ना, दिस चैप्टर इज लिटिल बिट बिग, थोड़ा सा बड़ा है, उससे ज्यादा नहीं है, बोल सकते छोटा ही है. तो टाइमिंग कम इसलिए मैं आगे का नहीं ले रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट वी स्टार्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर. ये पार्ट हम लोग वेडनेसडे को करेंगे. ठीक है. Anyone having any doubt? And what about your assignment? Student, you have to complete your assignment. तो जोया ने दिया है, मेरे को रिमेनिंग का आया नहीं है और शायद मुझे निधि भी दे देती है जल्दी, पर बॉयज के नहीं आ रहे और कुछ गर्ल्स तो विजिबल ही नहीं है. स्टिल दे आर आपसे. ठीक है सर मैं तो देता हूँ ना, फोटो भेजा ना आपको. हाँ बॉयज भी दे रहे ना, पर एक दो से क्या होगा, सबको देना. अगर आप भी नहीं दोगे बाद में लोड आप पे ही पड़ेगा. अंडरस्टूड? सपोज बोर्ड एग्जाम नहीं हुए तो कॉमन सेंस है, बोर्ड हो या नहीं हो, हम लोग जो पावर ऑफ टीचर तो रहेगा ही ना ऑलवेज. तो तुम्हारी बुक के बेस पे फिर इश्यू होंगे. अदर टीचर, आई एम ऑल्सो टेकिंग एक्शन, बट आई डोंट नो अबाउट अदर, बिकॉज आई वांट बुक. अगर आप लिखोगे तो आप पढ़ोगे. सर बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे सर. वो उसका कभी अब तक कोई सर्कुलर नहीं आया और ये बोला गया है जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसको 5 years लग जाएंगे उसको कंफर्म होने में. तो अभी 21 चल रहा है ना, 2020 चल रहा है, तो 2025 तक ये सिस्टम आ जाएगा. अंडरस्टूड? तो अभी तुम लोग के लिए बहुत टाइम है, तुम्हारे तक ये सिस्टम अप्रूव नहीं हो पाएगा प्रॉपरली.